Hi friends, this is PH 3501 Unit 1 Solid State Physics by Dr. M.R. Gadhvi. In the present unit, we will be, I think that is a unit number 1. So in this unit, we will be using reference books as well as the textbooks, but the prescribed textbooks for the syllabus is Solid State Physics by SOP Lai. Different variant cover pages are there. I think all are available in our library. I hope in the coming term you having a chance to visit the college physically and the physical lecture are going on, then you have definitely chance to access the library and the books as well. Otherwise online e-book you can try it out, but please do read the book, because solid state physics are in general people are getting fed up sometime. It is interesting, but sometime it get fed up. Okay, so we will be begin with the chapter number 3, that is the interatomic forces and the bonding. So in this case, in this chapter we will be learning the bonds, which is already you had learned in the 11th and 12th grade, but maybe the how exactly the bond is forming between this you had already have a idea, but now we will be trying to derive the equations between them, how the mathematical relations are developed between them, what is the required length, that is a bonding length, how we can measure it out, the bonding length, etc. we will be looking through this chapter. Sometime you feel that many of that is kind of a revision of 11th and 12th grade, so you can take it the advantage, and definitely you can score better in this particular chapter. Okay, so let's begin the content part of it. Then basically bond, we do have a feeling that bond, that means it's only attraction, or it is kind of a force which hold the atoms together, and that is what is a bond. So logically and literally it is true, but being a physicist, when you are going to check the each and every point, then basically it is not a single force, but it's a combinations of two forces. And I have downloaded few pictures, so you having a pictorial diagram, and you can very clearly visualize that one. Let us say take it the most simplest case, that is the two atomic bond. So let us say in my crystal there is only two atoms, and I am bringing these two atoms from the infinite distance to a close proximity. Now when it is coming to close proximity, that means one atom is able to see the presence of the second atom, or the neighboring or the adjacent atom. Right now let us take it much more simpler cases, and that is a one dimensional case. इसका मतलब कि ये एक ही लीनियर एक्सिस पे आपको सोचना है कि इसके आगे या पीछे कुछ नहीं है, लेकिन जस्ट ऑन अ राइट हैंड साइड बाय इंक्रीजिंग एक्स एक्सिस देयर इज अ वन एटम अवेलेबल. Just consider this figure and this figure are different. Okay, by vision also you can having an idea. So anyway, so now the atom 1 is adjacent with the atom 2. प्रीवियसली इट वॉज एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस, माने एक ये स्लाइड के कोने पे था तो एक यहाँ पे था, ऐसा आप सोच सकते हैं. दैट मीन्स दे डोंट फील द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ ईच अदर. अब यहाँ वाला एटम आप खींच के आप यहाँ पे ले आए, so now this atom is able to see the presence of the adjacent atom. When it is looking this atom, there is a few arrows you can see. The red arrow indicating the repulsion. तो repulsion कहाँ कहाँ पे हो रहा है? One is a atom of first atom nucleus, that is a positive charge, that is a proton, which is looking to the nucleus of the adjacent atom. So like charge is having the repulsion. So I am writing here repulsion. Same way the orbital electrons, that is the electronic clouds, which is around the nucleus.
So naturally that is more close to each other compared to nucleus. So electrons, again the like charges, and therefore it's shown by the red arrow, and that is a repulsive force. Now that is a one force. As I told in beginning कि जनरल बिलीफ ऐसा है, अगर 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को पूछो कि व्हाट इज बॉन्ड, तो वो बताएगा कि द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द एटम्स टुगेदर. कहाँ many standard books are referring that lines also. For that particular level it's fine. But now when you make a postmortem and just look at each and every perspective, then you having a pair of forces. Basically there is a two forces, attractive and repulsive. Repulsive हमने देख लिया, identical charges, nucleus to nucleus and electron to electron. Now dislike charges, so naturally there is a attractive forces. And what are the different charges? So the atom 1 orbital electron is looking to the nucleus of the adjacent one, so that is a one force, attractive force. Second attractive force is the nucleus of the first atom is looking the electron of the adjacent one. So this is a two red line and two green line are the main candidates for making the atoms together, and that is a combinations of attractive and repulsive forces. यहाँ पे adjacent जो ग्रे फिगर है उसमें लिखा है कि इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस. तो अगर ध्यान से देखो तो ये इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय इट्स होस्ट आयन, माने खुद ही अपने न्यूक्लियस को देख के अट्रैक्ट तो हो ही रहा है. लेकिन ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज नॉट हेल्पिंग अस टू होल्ड अ टू एटम टुगेदर. तो ये जो फोर्स है वो यहाँ पे नहीं दिखाया है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज फॉर अ पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट यू कैन डेफिनेटली से दैट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द होस्ट आयन इज ऑल्सो लुकिंग द होस्ट न्यूक्लियस, खुद का ही न्यूक्लियस देख रहा है और वहाँ पे अट्रैक्शन है ही, लेकिन दैट इज नॉट हेल्पिंग अस टू होल्ड द क्रिस्टल, to hold the various atoms together, right? And therefore it's not. But if someone asks you to count the number of forces do present in a two atomic setup, तो आप ये फिगर ड्रॉ करोगे, not this one. यहाँ पे देखो, this is attractive, this is attractive, this is attractive and this is attractive. Repulsion इसमें दिखाया नहीं है, okay? But same way you can do the arrow lines between negative to negative, that is a repulsion, positive to positive, that is a repulsion, and that will be only two lines. But in case of attraction, total number of the vectorial direction will be 4, correct? So this is a just pictorial representation of the force between the two atoms at the time of bond formation. Bond formation कब होगा? जब वो नज़दीक दिखाएंगे. If they are at the infinite distance, then there is no chance of a bond formation. फिर से एक बार attractive और repulsive with the different figure. So you having a two repulsion, one is nucleus to nucleus, और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो क्लाउड को ये पॉइंट कर रहा है. So cloud and cloud is repulsion to each other. फिर arrow blue देखो, that is showing attraction. So out cloud of the first arrow is attracted by the nucleus of the second, and the nucleus of the first is attracted by the cloud of the first arrow. So blue arrows are indicating the attractive. So this is also any one of the figures you can remember, and then you can write it out if there is a physical development of writing paper is developed. Anyway, this is how exactly from an infinite distance, दोनों bond काफ़ी, दोनों atom काफ़ी दूर है, there is no overlap of attraction and so on. So this is a internuclear distance, दो न्यूक्लियर के बीच का डिस्टेंस की बात हो रही है. सो इट्स क्वाइट फार. सो यू कैन सी देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलमोस्ट जीरो. नाउ यू आर ब्रिंगिंग देम टुगेदर, माने आप उसको कुछ एक्सटर्नली आप फोर्स कर रहे हो और दोनों एटम को नज़दीक ला रहे हो, माने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आप डिक्रीज करो. ये इंक्रीजिंग एक्सिस है ना, सो यू आर डिक्रीजिंग दैट वन, सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स द जीरो. सो यहाँ पे देखो बोथ क्लाउड्स आर टचिंग टू ईच अदर. वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, आई एम सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव.
and still you are forcing them to close to each other, माने दोनों clouds overlap हो रहे हैं. Can you see this? And then there is a dominancy of a repulsion. तो अगर ये पूरा behavior आप देखो, then it is when they are overlapping to each other, the repulsion force is very much strong. When they are very much away to each other, attraction force are in the picture. यहाँ पे रिपल्शन ऑन दोनों एक्सट्रीमिटी कंडीशन में दो में से एक ही फोर्स अवेलेबल है, माने वो डोमिनेटिंग है. बट देयर इज़ अ वन सिचुएशंस वेयर द potential energy will be negative or the force will be zero, that we will see, and this is basically a situation where the bond will be formed. Okay, let us see that one. Now this blue line is a trend line of a motion of a two edge atoms. यहाँ पे एक simplest case लिया है because one nucleus and one electron, so both are very far to each other, so their potential energy is almost zero, माने they are not doing any kind of exertions on either or. तो यहाँ पे दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं. थोड़े नज़दीक लाएंगे तो एट्रैक्शन आएगा, सो ज़ीरो में से थोड़ी नेगेटिव एनर्जी आएगी. अब क्वेश्चन ये होता है कि नेगेटिव एनर्जी क्यों आ रही है? बिकॉज जब आप दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दो एंटिटी खड़ी है, यू आर ब्रिंगिंग देम टू ईच अदर, सो यू आर डूइंग वर्क ऑन इट, राइट? सो एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द the work done is on the system, so naturally your total energy will be negative, so your potential energy will be goes to the negative. और जब आप और दो नज़दीक ले जाओगे एंड ओवरलैप कर दोगे, राइट, सो यू आर डूइंग अ वर्क ऑन अ सिस्टम, बट नाउ इट इज़ रिपल्शन, सो they wish to go away to each other, that means work done by the system. ये फेज में वर्क डन ऑन द सिस्टम, दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम. ओके, एंड देयरफॉर द एनर्जी इज अ पॉजिटिव एंड द एनर्जी इज अ नेगेटिव एंड द पॉजिटिव. ओके, सो विद दिस बेसिकली इट इज इंट्रान्यूक्लियर डिस्टेंस, समटाइम इट्स नोन एज अ इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस. अगर ये एक एटम से ज़्यादा एटम से बन रहा है तो मोलिकुलर इंटरेक्शन हो रहा था. बट when their potential energy will be minimum, that particular distance, intranuclear distance, is referred as the bond length. वहाँ पे atom is happily able to stable because the potential energy is minimum. This is the best example कि when you will be the most stable, or the entity will be more stable when its potential energy will be minimum. तो यहाँ पे ये पूरी ट्रेंड लाइन ऑफ द ब्लू में अगर आप मिनिमम एनर्जी कहाँ पे, दो इट्स अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इट्स अ बेसिकली with the reference line of your zero, that is fine, but here you are saying that it's lesser, so it is that formation will be the most stable formation, and और उसी लिए ये सिचुएशन पे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन परमानेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली हैपनिंग, व्हाट आर द थियरी एंड व्हाट इट टर्म्ड एज. सो इट इज़ नोन एज अ कोहेसिव एनर्जी. कोहेशन माने टू होल्ड टुगेदर, इट्स अ लैटिन वर्ड. सो कोहेसिव एनर्जी इज द एनर्जी गेन बाय अरेंजिंग द एटम इन अ क्रिस्टलाइन स्टेट. माने आप ऐसा सोच लो कि कंपेयर्ड विद द गैसियस स्टेट, मान लो कि वो पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, माने वन एटम इज़ नॉट लुकिंग टू द अनदर एटम, या तो एक दूसरे पे प्रभाव में नहीं थे, या तो एक दूसरे को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे थे. सो इन दैट सिचुएशंस इट इज़ नॉन एज अ गैसियस स्टेट. तो गैसियस स्टेट से आप उसको क्रिस्टलाइन स्टेट में फोर्सफुली वर्क डन करके ला रहे हो, एंड उसके लिए जो भी आप एनर्जी स्टोर कर रहे हो, so that is referred as a cohesive energy, or the energy gained by the system to arranging the atom together. The cohesive energy of the solid, दूसरी definition, the cohesive energy of a solid refers to the energy required to the separate constituents atom apart from each other and to bring them to the assembly of a neutral free atoms. माने एक
न्यूट्रल फ्री एटम को असेंबली सिचुएशन में लाने के लिए जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है दैट इज रिफर्ड एज द कोहेसिव एनर्जी। लास्ट डेफिनेशन में दोनों फ्लेवर कवर कर रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई आई पुट इट इन 3 definitions. Any of this will give you the enough sufficient clarity of the binding. Cohesive energy, the amount of the energy evolved when a crystalline solid is formed from infinitely separated atoms. ठीक है, इनफाइनाइटली सेपरेटेड एटम में से जब क्रिस्टलाइन फॉर्म हो रहा है उस वक्त जो एनर्जी उद्भवित हो रही है, द डेवलपमेंट ऑफ द इवोल्व, दैट इज रिफर्ड एज द कोहेसिव एनर्जी। उसमें ही एक और वे ऑफ एंगल टू सी द कोहेसिव एनर्जी, एंड दैट इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट दिस एटम इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स टू द इनफाइनाइट। माने वही केस हम रिपीट कर दे, पहले दूर से नज़दीक लाए थे, अब नज़दीक से दूर लाएंगे तो उतनी ही एनर्जी जाएंगी, राइट। लेट मी ब्रिंग इट टू, अगर ये एनर्जी फिर से मैं इन्वर्सली दे दूँ, ये नेगेटिव है, अब मैं इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे दूँ तो वो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट दिस एटम। फिर से ये क्लोज एटम बॉन्ड में फॉर्मेशन आ गया, अब यहाँ से मैं यहाँ सेपरेट कर रहा हूँ एटम को, तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, ये मैग्नीट्यूड की कितनी, तो ये 1 बॉक्स 2 बॉक्स और हाफ बॉक्स है, तो 2.5 बॉक्स जितना मैग्नीट्यूड अगर मैं पॉजिटिवली दे दूँ, ये नेगेटिव है, लेकिन उतना ही मैग्नीट्यूड की मैं पॉजिटिव एनर्जी दे दूँ तो वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, करेक्ट। सो वो बात बता रहे, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट the atoms in a crystalline solid to the infinite distance, which is known as cohesive or well known by binding energy of a crystal. So let us try to derive the equation for this. Okay, so we try to develop a model. Now the model can be visualized in a two-way. As I told in beginning, it could be a force or it could be the energy. So first time we will be develop the model on the basis of force, and in the second time we will be develop the model in the mathematical development in the terms of energy. So let's begin with that. So the force for the bond, I can write it out, A upon R raised to capital M minus B upon R raised to capital N. What is the first factor? What is the second factor? The first factor is shown over here, the attractive force, right, and the second one is a repulsive force. आपको लगेगा कैसे पता चल गया, अरे यहाँ लाइन देखिए, attractive force is a positive and repulsive force is a negative. Do remember it's a just inverse of the energy. attractive energy negative होती है, repulsive energy positive होती है, यहाँ पे attractive force की बात आ रही है, तो attractive force will be in the first quadrant और सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सॉरी, ओके। द फर्स्ट फैक्टर विल बी द एट्रैक्टिव, द सेकेंड फैक्टर नेगेटिव फोर्स, दैट विल बी द रिपल्सिव फोर्स। उसके डिस्क्रिप्शन देख लीजिए क्या आर है, आर है इज द इंटर एटमिक और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और द एटम विल बी मेजर्ड फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, सो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलो या तो द separation of atom from center to center, that is it. A, B, M and M are basically mathematically अगर देखा जाए तो वो constant है, लेकिन और M और N अगर देखा जाओ तो वो actually exponentially R के exponent में है ना, so R के exponent, तो exponential power constant, right, exponential power constant, और A और B वैसे मैथमेटिकली देखो तो वो कॉन्स्टेंट ही है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में अगर मैं लिखूं तो A इज़ बेसिकली अ एट्रैक्टिव कांस्टेंट, एट्रैक्टिव फोर्स कांस्टेंट, एंड कैपिटल B टर्मिनोलॉजी इज़ बेसिकली, अगर शायद यहाँ पे भी लिखा होगा N इज़ अ नेसेसरी ग्रेटर देन द, ओके, R इज, नाउ N इज़ नेसेसरीली ग्रेटर देन द M. सो अगर नंबर वाइज देखा जाए, सो कैपिटल M का नंबर दैट विल बी स्मॉलर देन द N. N इज नेसेसरीली ग्रेटर देन दिस, देन एंड देन ओनली, माने यहाँ पे लिख के दिया है मैंने, देन एंड देन ओनली दिस इक्वेशन विल बी होल्ड्स ट्रू, ओके, देन एंड देन ओनली वी कैन विजुअलाइज, और बेसिकली इट्स अ कोलम्बियन वन.
Okay, m is usually in order of a 2. Okay, let me use a pen and let me say where it is. Okay, m is in the order of 2, where n is usually in the order of 10, 7 to 10. So this is a numerical range. Okay, so you will be having n or m क्यों बड़ा है, so you can having a very clear idea about it. Okay, so now continuation of this. So same equation I am rewriting here. F is basically a force, but force is basically a function of a x-axis, or that is the internuclear distance or interatomic distance from center to center. तो दो एटम के सेंटर का जो डिस्टेंस है दैट इज शोन ओवर हियर. ठीक है ना. तो F इज अ बेसिकली फंक्शन ऑफ R. अगर R बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, अगर R कम होगा तो एट्रैक्शन ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा. So this is F is basically a function of R, and A upon R raised to capital M minus B upon R raised to capital N. Now F of R is becomes 0 when you are exactly on the x-axis at a situation of R is equal to 0. So when F of R of 0, the value will be 0. So माने R is equal to R 0 अगर है, ये पॉइंट की वैल्यू R की वैल्यू यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ R0. सो इफ इट इज़ R इज इक्वल टू R0 देन F ऑफ R बिकम 0. अगर ये डॉटेड लाइन ऑफ एट्रैक्टिव फोर्स, डॉटेड लाइन ऑफ रिपल्सिव फोर्स, और दोनों को समेशन करूँ तो ये सॉलिड लाइन हो रही है. तो सॉलिड लाइन देखिए कि जब दे आर फार टू ईच अदर, द फोर्स मैं उसको नज़दीक ला रहा हूँ, मैं R डिक्रीज़ कर रहा हूँ, तो डिक्रीज़ करने से उसका फोर्स बढ़ रहा है. एट अ वन पर्टिकुलर पॉइंट फोर्स इज मैक्सिमम. देन अगेन आई एम डिक्रीजिंग, एंड व्हेन R is equal to R0, force becomes 0, and then still I am bringing them, decreasing their distance, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ओवरलैप हो जाएगा और रिपल्सिव फोर्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगा. राइट, यहाँ पे एट्रैक्टिव स्ट्रॉन्गर, यहाँ पे रिपल्सिव स्ट्रॉन्गर, और यहाँ पे दोनों कंपेंसेट हो रहा है, बैलेंस हो रहा है. माने कि दिस इज अ सिचुएशंस वेयर द सिस्टम बिकम स्टेबल. आर यू गेटिंग मी? सिस्टम स्टेबल है. गैसियस स्टेट्स में से मैं सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक ही सिचुएशन R इज इक्वल टू R0 ऐसी मुझे दिख रही है, वेयर इट बिकम स्टेबल. And when it becomes stable, so naturally they both atom are happily remain wish to there. They don't want to go away to each other, they don't want to go further close to each other, but they will stay there. Or other way you can also argue, यहाँ पे attractive force भी नहीं है, negative force भी नहीं है, repulsive force भी नहीं है, तो नज़दीक आने की या तो दूर जाने की संभावना शून्य है, no possibility. And in that case force becomes 0, so equation I can equate with 0. And if it's 0, then I can take it one factor to the left hand side, another factor, so I can eliminate the negative sign. From this I can find it out B by A ratio, and that is equal to R raised to n minus m. क्वेश्चन ये होगा कि A upon B क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे n minus m लाना था, because I had already mentioned n is greater than m. So n minus m. So ऊपर मुझे n रखना था, नीचे मुझे m रखना था. So R0 will go to the place of A will come to the place of R0 raised to n, and so B upon A. And therefore the internuclear distance or a center to center atomic distance R0 is given by B upon A raised to 1 upon n minus m. This is also referred as equilibrium spacing. This is also referred as equilibrium spacing. R0 is also referred as equilibrium spacing. You can look at here. R0 is also known as equilibrium spacing. Or point M is roughly always around 2, N is always around 7 to 10. This could be your short question on a day of your exam. Okay, so on this
by fundamental knowledge, let's go with the finding out the energy. तो यहाँ पे हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया. ओके, नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया. So as I told you, you can visualize the bond in the terms of energy as well as in terms of force. Force का देख लिया. Let us check it up the energy. एनर्जी का कर्व अगर मैं ड्रू तो इट विल बी जस्ट इनवर्स दैट वन. फिर से मैं आपको प्रीवियसली सेट पे ले जाए. फोर्स वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे आर है, एट्रैक्टिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, रिपल्सिव फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और दोनों का समेशन करो दोनों डॉटेड लाइन का, तो द कर्व विल बी कमिंग पैराबोलिक कर्व काइंड ऑफ, बट फ्रॉम इट मूव्स फ्रॉम अ फर्स्ट क्वाड्रेंट टू द फोर्थ क्वाड्रेंट as I am decreasing r from infinite to lesser distance. तो यहाँ पे आप देखिए r I am increasing larger distance to the smaller distance. Repulsive energy will be positive because work done by the system, and work attractive energy is negative because work done on the system. Okay, so repulsive and total energy माने summation of the repulsive and sum with the attractive, that is a capital U of R, that is I am taking. अब U of R कैसे मिला, और ये इक्वेशन देखो आप ध्यान से, तो प्रीवियस इक्वेशन से थोड़ा अलग है. प्रीवियस इक्वेशन में कैपिटल A था, R रेस टू कैपिटल M था, और यहाँ पे माइनस साइन थी, कैपिटल B अपॉन R रेस टू स्मॉल m था. यहाँ पे पूरा सिनारियो चेंज हो रहा है, स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल m स्मॉल. तो वही हम लाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. सो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख सकते हैं? वर्क डन, राइट. सो देयर इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर मैं गिनूँ तो वो एक एटम के लिए मैं गिनूँ देन एफ इंटू डी आर हो सकता है. लेकिन आई इन क्रिस्टल, इन अ सॉलिड, आई डू हैव अ प्लेंटी नंबर ऑफ एटम्स एंड द availability of that. So I have to take the integration, I have to cover all the atoms. And f of r, the equations you are knowing. I forget to write it out dr here, so I'm sorry. So here I'm writing dr, so dr must be here, dr, right. Similarly here there will be a dr. Okay, so f of r, f, so f dr, so this is force. The equation you are knowing, a upon r raised to capital M minus b upon r raised to capital N dr. And now for easy of us, r I am taking in a numerator from denominator to numerator. So a into r raised to minus m minus b upon r raised to minus m dr as it is. Okay, now you are doing the integration with the only a is a constant. So r is raised to minus m का अगर आप लो तो it become 1 minus r raised to 1 minus m, and that power become denominator of it 1 minus m minus b raised to r raised to 1 minus n upon, and the sum constant. Correct. Now for a much more simplification, a upon 1 minus m, that is a constant part, so I am putting in a one separate rectangular box, and variable terminology, that is 1 upon r raised to m minus n, I am putting in a second terminology. Similarly for the केस बी. यहाँ पे आप देखो तो, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो, अगर 1 माइनस एम को 1 माइनस एम, ये ऊपर से मैं आर को नीचे ला रहा हूँ बिकॉज माई बेसिक ट्रेंड ऑफ इक्वेशन आर इज इन अ डिनोमिनेटर पार्ट. सो मैं ऊपर से नीचे ला रहा हूँ, तो 1 माइनस एम का नेगेटिव साइन अगर बाहर निकालूँ तो m माइनस 1 हो सकता है. करेक्ट. So a become negative, this part become a negative, so negative sign appears like this. b was negative, यहाँ पे भी मैं r को ऊपर से नीचे ला रहा हूँ, so I am changing 1 minus n to n minus 1, and therefore it become negative, and this negative and that negative, this negative, existing negative become positive, so negative negative become positive. Correct. Okay, now this factor a upon minus m capital M minus 1, that become small m.
sorry, small a, and r capital M minus 1 becomes small m. यहाँ पे फिर भी दिया है a is equal to a upon m minus 1, b is equal to b upon n minus 1, m is equal to m minus 1, and this one, and that is I am putting here. So that way the potential energy can be written as minus a upon r raised to m b upon. अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखिए आप, तो ये attractive energy है, it goes in a fourth quadrant, so it's a negative, so it's a minus sign, so minus sign is representing here. So ultimately you are proving that from force to energy conversion of the bond. Okay, here इसके थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि what is R, what is M, and the earlier we have seen, but let us repeat again. So R is the distance between center to center of an atom. N and M are the positive numbers basically, but basically it's a exponential power factor, right? A is a positive constant which determines the strength of a attractive force, and B is a positive constant and determine the repulsive force. अगर ये force की बात हो रही है तो, right? The condition under the particles form a stable lattice or a stable bond बना रहा है is at as a function of a u of r exhibits the minimum energy. और minimum energy यहाँ पे देखिए तो ये जो solid line है that is the combination of a repulsive force as well as the attractive. तो एनर्जी की पूरी लाइन ड्राइव कीजिए और जहाँ पे वो मिनिमम एनर्जी है वहाँ पे बॉन्ड बनेगा. तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है. इन द केस ऑफ अ फोर्स, जहाँ पे फोर्स ज़ीरो हो रहा है, दैट इज़ अ जॉइनिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड लाइन टू द एक्स एक्सिस, वो बॉन्ड फॉर्मेशन है, दैट इज़ R0. और एनर्जी का अगर कर्व है तो जहाँ पे मिनिमम एनर्जी जनरेट हो रही है, दैट पॉइंट इज़ रिफरिंग एज द बॉन्डिंग लेंथ और द बॉन्ड पॉइंट. Okay, so R0 is the distance between the atom from a minimum of U of R to occur the spacing of R0, which is known as the equilibrium spacing. वो भी हमने देख लिया कि minimum potential energy की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ या तो इक्विलिब्रियम स्पेसिंग बोलते हैं, राइट. एंड लास्ट पॉइंट, दिस मिनिमम एनर्जी that will be U of minimum at R is equal to R0 is always negative, right. तभी सिस्टम स्टेबल है. अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो सिस्टम विल बी मच वाइब्रेंट, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही नहीं, वो तो गैसियस स्टेट हो गई, राइट. सो इज मिनिमम, दिस मिनिमम एनर्जी इज नेगेटिव एंड हेंस द एनर्जी इज नीडेड टू डिसोसिएट द बॉन्ड. इसीलिए तो हम अगर किसी बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें एनर्जी टॉपअप करनी चाहिए, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि वो नेगेटिव थी, करेक्ट. ओके, विद दिस मच विजन लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज वी हैड प्रूव दैट इट इज n इज ग्रेटर देन m. हमने देखा कि कैपिटल M की वैल्यू 2 के आसपास है, कैपिटल N की वैल्यू 7 या 10 के बीच में वेरी हो रही है, लेकिन स्मॉल n और स्मॉल m में भी n तो कैपिटल ग्रेटर ही रहेगा स्मॉल m से. जैसे कि लार्जर n वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन m, then smaller n is always greater than m. Sometime in a description they are asking us to prove it. Let us try to prove it. So u is equal to a upon r raised to m plus b upon r raised to n. a will be negative. अगर मैं उसका डेरिवेटिव लूँ, माने du by dr, माने ये अगर लाइन का मैं स्लोप लूँ तो स्लोप विल बी ज़ीरो एट दिस पॉइंट. सो du by dr एट दिस पॉइंट विल बी ज़ीरो. माने जब ये एनर्जी विल बी क्योंकि इन वे देखिए आप तो यहाँ पे तो एनर्जी कांस्टेंट है, राइट. सो इट्स अ सम नंबर, और नंबर का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो. सो विद दैट लॉजिक du by dr, सो एनर्जी का डेरिवेशन अगर आप लोगे तो ज़ीरो आएगा, स्पेशली r इज इक्वल टू R0 पे तो वो कांस्टेंट ही आएगा. एंड देयरफॉर with the same logic, what we can do it further. So du by dr is equal to 0 at a equilibrium distance.
एट इक्वल बॉन्ड फॉर्मेशन की जगह पे आप एनर्जी की चीज बात कर रहे हो तो वहाँ पे एनर्जी ज़ीरो है, यू आर इक्वेटिंग दैट. If you are equating, then take a one factor to the other side, so you will get this. Okay, then you will be getting from this equation you are getting a r raised to n minus m. The same logic, ये n will be go to the top, bn upon am नीचे आ जाएगा तो bn upon am, तो this will become, so you are changing like this. So ultimately r0 is equal to b upon a n upon m raised to 1 में. अगर फोर्स की बात में अगर आपको याद दिलाओ तो यहाँ पे कैपिटल n अपॉन कैपिटल b अपॉन कैपिटल a रेस टू 1 अपॉन कैपिटल n माइनस कैपिटल m, ये फैक्टर नहीं था. ओके, बट इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंटेशन r0 अगर रिप्रेजेंट करो तो n और m से मल्टीप्लाई कर दो फैक्टर b और a को n raised to 1 minus. So almost similar kind of equation. Now when you go with the second derivative, तो second derivative जनरली हम किसके लिए लेते हैं? अगर आपको याद है तो आपको ग्राफ पे से पता चलेगा whether the graph is increasing with the slope or decreasing of the slope. Are you remembering that? So d square by du मैं इसलिए ले रहा हूँ because I wish to prove that whether I am decreasing with the n power or increasing with the m power. Right, so I am finding that m की वैल्यू is कम lesser है और n की वैल्यू ज़्यादा है. Right, so with that logic I can understand, sorry, this factor will be always, क्योंकि ये m है, m की न्यूमेरिकल वैल्यू lesser है तो नेगेटिव फैक्टर जो है आपका that will be smaller in amount compared to the n is larger, तो larger in amount. तो ये सेकंड डेरिवेटिव है जो आपका वो पॉजिटिव मिला. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि द आउटकम ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो, वो पॉजिटिव ही आएगा. विद दिस लॉजिक आई एम पुटिंग ओवर हियर द सेम, आई एम रिपीटिंग, सो एटलीस्ट द नेक्स्ट स्लाइड you can having a continuation. So bn upon n plus 1 raised to r raised to n plus 2 minus this is greater than 0. From this relation I can have this relation r raised to n plus 2 bn n plus 1 minus this. अब क्वेश्चन ये रहता है कि r raised, okay, so now you are taking r n on one side and m on the other side, so negative portion, नेगेटिव साइन इस तरफ गई तो ये नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, तो नेगेटिव निकल गया. सो यू आर ऑन द अदर साइड एंड नाउ यू आर सॉल्विंग दिस. सो r raised to n minus m you are taking on one side and just constant you are taking on the one side. So you are getting this relation, and from this relation you can prove that this b and this b will get cancelled, this n and this n will get cancelled. So am and this am will get cancelled, so rest will be n plus 1 and m plus 1. n plus 1 is greater than m plus 1. 1 भी अगर मैं कैंसिल कर दूँ, so I am proving that n is greater than m. So मैंने आपको बोला था कि there is a chance कि अगर आपकी एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव ले सकते हैं तो this would be your full length question of the 10 marks. Anyway, so right now we will be not discussing what are the type of exam, but most probably it will be looking to the chance it having a objective type the way you have given in the FY BSc. With this I am stopping with the first lecture. Thank you so much for having a patient. Stay home, stay safe. Thank you so much.